I will make 2-3 brief points for the parents. These are applicable for the student, but more for the parents. Today, the students or your son, your daughter, they don't require too much of counseling. Who actually require counseling are the parents. Most of us have produced the children, but parenting, we have zero knowledge. And that is where we are lacking. First is, be very, very careful about the health of your child. Very careful. We are living in 21st century where the problem is not of shortage. The problem is of abundance. बहुत ज़्यादा खाने को मिल रहा है. That is the basic problem. अगर आप माँ बाप के तौर पर अगर सोचें कि आपके बच्चे के 16 साल में 15 साल के बच्चे के अगर बॉडी पे इतना एक्स्ट्रा फैट है, you should be worried. Because if the child is not taking care of the health, nothing else matters. And मैं अपने NCC camps में and wherever I go, I have about 60 institutions under me where we are having NCC. That is my first point. पीयूष सर ने बताया आपको games where you can play role, important role as a father, as mother, is you have to set personal examples. चेयरमैन सर ने बिल्कुल सही बताया, भतीजे को बोला उन्होंने कि दौड़ा कर. Why did he follow him? Simply because he himself runs. ये घर में बैठ के टीवी के सामने अगर भाषण देंगे वो कहेंगे चाचा जी फ्रॉड है. What he says he doesn't mean that. So as a parent आपने एग्जाम्पल सेट करना है. और मैं कोई भी बात आपको वो नहीं शेयर कर रहा which I am not following. In my own house, the day is not completed till we. When I say we, it includes me, my wife, my daughter and my son. If we have not exercised, if we have not played any game. And games are not only for your physical and mental health. ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा. Games will teach you something which classroom study cannot teach. सर ने एक बड़ा जो पॉइंट रेज किया था, सुइसाइडल जो टेंडेंसी है हमारे बच्चों में. इफ यू मेक योर चाइल्ड प्ले सम गेम, टेक माई वर्ड्स, देर आर 90% चांसेस दैट दैट चाइल्ड विल नेवर कमिट सुइसाइड. होती क्यों है सुइसाइड? मैं काफ़ी डीप स्टडी करके इसमें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे बच्चों को सेटबैक की आदत ही नहीं है. दे जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट डिफीट. दैट इज द इश्यू विद देम. आपका बच्चा अगर आउटडोर गेम खेलेगा, कोई हारेगा दो जीतेगा, he will learn that life will not be same every time. This is what is going to happen in life too. कई बाजी होंगी जो जीतेंगे, कई बाजी है जो हारेंगे. And that you can only learn during games when you have outdoor activities. So as parents, my request is make sure that irrespective of your class, irrespective of competition your son or your daughter is preparing for, they do attend some outdoor activity as a team. अगर आपने ये इंश्योर कर दिया, हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपके बच्चे का मेंटली एंड इमोशनल जो स्ट्रेंथ है, इट विल बी वेरी हाई. दूसरा पॉइंट भी सर ने टच कर दिया था, मैं जस्ट एक उस पर ऐड करूंगा. That was about the personality development and the communication skill. Very, very important. Important part of personality is the knowledge and communication. Two things. Health is another part which I already covered. मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ये don't go by percentage, कितना आया कितना. मेरे डॉटर है, I have a son, daughter is about 25 years of age. My son is 21 now. My daughter was Miss Delhi, Femina Miss India finalist 2016, 22 years of age. 2019 she appeared for UPSC exam, first attempt, no coaching. 93rd All India rank, she is Indian Foreign Service officer today. Only because, why I am saying it, only because we planned it well. We set, I and my wife, as parents, we set examples before them. मेरा बच्चा अखबार नहीं पढ़ता, आप पढ़ते हो क्या?
We have that habit. I developed that habit once my children were born. Their day is not complete till the time we read newspapers, we read books. That kind of environment you have to create at home. भाषण देने से कुछ नहीं होगा. कई पेरेंट्स आगे बोलते हैं, सर बड़ी मुश्किल है, बच्चा सुनता ही नहीं है. I said don't worry. You should be worried. He is watching you. आपको देख रहा है. चिंता उस पर कीजिए. मैं चूरू गया, मेरे ब्रदर हैं, उनका लड़का IIT में है. कहता है यार बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाता है, हेलमेट नहीं पहनता. मेरा एक सवाल मेरे भाई से था, आप पहनते हो? कहता है मैं बहुत ही धीरे चलाता हूँ. अच्छा नो, बात वो नहीं है. एज फादर मैं सबसे पहले सीट बेल्ट लगाता हूँ. माई चाइल्ड विल फॉलो दैट. एज फादर अगर मैं मोटरसाइकिल में बैठता हूँ, इफ आई पुट ऑन हेलमेट ही विल डू दैट. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसलिए डोंट वरी, योर चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू. You should be worried that he is watching each and every activity that you are doing. And आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं. फिर वो सोचेंगे मेरा बाप कहता कुछ और है, माँ कहती कुछ और है, करती कुछ और है, फ्रॉड है. एक्चुअली यही कहानी है. And this is what I share with my NCC cadets. Try to follow that. बेटा मेरा 21 साल का है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है. He was part of Rajasthan Ranji team. Is part of Mumbai team. COVID आया, we had some issues, technical issues. He got inspired with his sister, picked up a book. Last जो मैं बताता हूँ आपको, जब एग्जाम दिया, he did his graduation from Mumbai. That is where my family is staying for last about 7 years. बच्चा 13-15 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, लेकिन घर का एनवायरनमेंट ठीक था. And we set that environment. Without mincing those words I am saying, I have no role in what they are going to become, but I had role in setting that kind of environment. That I can say. तो कोविड टाइम आया, किताब उठाई, बेसिक क्लियर थे. जब उसने लास्ट अपना BA का एग्जाम दिया था, he has failed in 7 subjects. 14 थे उसके. They have semester system. Now Rajasthan universities and where we have now semester system from this year onwards. Mumbai had that system for last 10-12 years. तो लास्ट सेमेस्टर देने लगा, कहते पापा 14 मेरे पेपर्स बचे हुए हैं. अच्छा 14 यार बहुत ज़्यादा हैं. कहता है नहीं अभी तो साले 6 ही हैं, 8 पिछले साल के, 2-3 साल के, जो भी था 1 या 2 साल के. That means he had failed in those subjects. Why? Because he was playing all the times and I never insisted. Somehow he completed those 14 subjects, got the graduation degree. When COVID came, no games, he also picked up the book. Basics were clear, no doubt. And appeared for the exam. He had done extremely well, passed his prelims, done very well in mains. He has a very bright chance of getting through in civil services this year. The boy who was playing for 13-14 years professional cricket. So 2 साल बाद में अगर आपको या 1 साल नेक्स्ट ईयर आपको सुनने को मिले कि there is a boy who is an IAS officer playing in Indian team, don't get surprised. We have 15 years of hard work for that. He has put in that kind of effort to be where he is going to be. I have no idea about the future, what he becomes. But today he is at that point. He is at the door of Indian team, and at the same time he has a very bright chance of clearing the UPSC with a very good rank. Why it is possible? Because I told you, we changed ourselves the day I became father and I became mother. Many things we changed. This is a 20-25 years of commitment. आप ये मत सोचना कि उनको दे दिया, मोबाइल दे दी, पैसे दे दिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा. So try to set good examples. आपसे बड़ा रोल मॉडल आपके बच्चे के लिए, ये 6ठी से 9वीं तक के बच्चे हैं, आपसे बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं है, आप मान के चलिए. सरकार पीयूष जी का नंबर भी बात का है, आप बता दिए, उनका बहुत बड़ा रोल है. आपने बताना है उनको बच्चों के क्या अचीवमेंट है. सारे बोलते हैं, बड़ी फेमस कोटेशंस है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप. एक दिन होगा जब पीयूष साहब ने शुरू किया होगा 1 या 2 कमरों से. आज कहाँ है?
आपके बच्चों से शेयर करो ये, अदरवाइज वो इस इंप्रेशन में रहेगा कि तो ऐसे ही बन गया होगा। ऐसे कुछ नहीं बनता, बहुत सालों के, कई डिकेड्स के एफर्ट्स हैं इसमें। बट एज पेरेंट्स यू हैव टू शेयर दैट, आई डू दैट। एनी इंस्पायरिंग स्टोरी आई शेयर विथ माई चिल्ड्रन। Obviously, when you have that kind of environment at home, excellence is very obvious. In Lal Bahadur Shastri Academy, there were 500 plus officers, 180 IAS officers, 200 IPS, everybody for foundation course. One officer got the best officer training award, that was my daughter. In Indian Foreign Service, where they underwent 8 months of training, one got the gold medal from the Foreign Minister of India, again that happens to be Aishwarya Shoran. All because very disciplined life, जो पीयूष जी ने बताया. Even today, every day 5 to 6 hours she studies, learning something new. She says, I don't know anything, I have come in the foreign service, I have no idea what to do. And when you approach life with that, the tendency to know is there. There are others who think, अरे IFS आ गए, IAS बन गए, अब तो सब कुछ पता है हमें. No. There's so many things to learn and she's very clear on that. So create that kind of environment. I am giving the example not to praise my children, but I am just saying, as parents, please create that kind of environment. If you want your child to have a good future, to be a good citizen, to be a good son, good daughter, is the minimum that you have to do. थर्ड में एक चीज आपको और बताऊंगा, जस्ट आई विल टेक 2 minutes more. बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट देयर फ्रेंड्स. ये बच्चों के लिए भी है, दे शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू एज पेरेंट्स हैव ए इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. एक बड़ी कहावत है कि शो मी योर 5 गुड फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू वेयर योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी. आप मुझे अपने 5 दोस्त दिखाओ, मैं बताऊंगा कि आपका भविष्य क्या है. दे हैव दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट. आप एज ए फादर, एज ए मदर इसमें रोल प्ले कर सकते हैं. बच्चों को बताइए कि जो भी दोस्त चुने अच्छे चुने. आपको लगता है कोई नेगेटिव है, प्लीज चेंज द प्लेस. इफ नीड बी चेंज द स्कूल, इफ नीड बी चेंज एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल, बिकॉज दे विल डिविएट हिम, दे विल डिविएट हर, द लाइफ विल मूव इन ए डिफरेंट डायरेक्शन. तो आप बहुत बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है और ये बच्चों के लिए भी है. बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फ्रेंड्स. They will impact your life in a way that it will be take 180 degree, complete change. So as parents, please ensure that your children, your daughter, your son, they remain in good company. I am sure when they remain in good company, they will learn good habits, they will dream big and they will do greater things, good things in life. Once again, sir, thank you very much. It's a pleasure being here. Thanks to everyone, madam. Thanks to Piyush ji. Thanks to Yogendra Singh ji. I have a long association because this is the only institution where we have a college, we have a school, and we have a wonderful environment. There is a lot of support that comes from Yogendra ji, Piyush ji. Whenever we ask for anything, for the cadets, for the battalion, they are always willing. Thank you, Janu sir. Thank you very much, sir. Jai Hind.